Hello everyone, this question appears in Class 6 NCERT chapter of Understanding Elementary Shapes. This is 8th question of its exercise 5.4. So the question says that find the measure of angle shown in each figure. First estimate with your eyes and then find the actual measure with a protractor. So इसे नंबर देंगे हम 1, 2, 3 and 4. So एक जनरल एस्टिमेट एंगल होगा हमारा अराउंड 35, ये होगा अराउंड 120, ये होगा हमारा बिकॉज ऑफ अक्यूट, ये होगा हमारा 70 के अप्रोक्स एंड दिस वन इज अराउंड 130. देन व्हेन वी मेजर इट थ्रू प्रोटेक्टर, देन एंगल 1 इज इक्वल टू हमारा एंगल 40 डिग्री, एंगल 2 इज इक्वल टू 130 डिग्री and angle 3 is equal to 65 degree and angle 4 is equal to 135 degree. So these are the actual measurements through protractor and these are the estimate angles. Thank you.